आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सीईओ व एमडी अपोलो रेडियोलॉजी इंटरनेशनल डॉक्टर श्रीनिवास राजू ने कहा कि ARI एकेडमी और रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी लंदन के इश्तराक से आलमी म्यार का ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जा रहा है, जहां पर तुलबा को आलमी म्यार की ट्रेनिंग दी जाएगी। Thank you for coming, and I know it was a short notice for all of you. So my name is Dr. Raju, Srinivas Raju Kaladindi. I'm a radiologist. I work for Apollo Radiology International. I'm the CEO and medical director. And we have an education division called ARI Academy, and that's what we're going to talk about today. So I trained as a radiologist in India, first in Nizam's Institute in Hyderabad. And then I moved to UK and worked there for about 10 years and came back and have been with Apollo since 2016. So radiology is a specialty that deals with scans, I'm sure most of you know. And because there has been an improvement in technology in the last 10 years or so, the ability to look into the patient's body using scans is now far better than what it used to be 10, 20, 30 years ago. So that means a lot of the diseases have been are now diagnosed using scanning, imaging, without the need for surgeries and any other invasive procedures. So radiology has become extremely important. Radiologists play a very important role in patient management. So you can see in India now that there are scanning centers everywhere. There are diagnostic centers. Very high-end equipment is being brought into the country. And this is not only in the major cities now, even the towns and smaller towns also have this imaging equipment. But the doctors that read these scans, that are radiologists, the training that is given to these doctors is still not changed much. So we still do a 3 years post-graduation program, like 1960s and 70s, that has not changed. And also the training quality across the country is very variable. There are some really good training schemes, and there are some not very good schemes as well. So because if the doctors are not good, then the diagnosis may not be good enough, and ultimately patients suffer. So we set out to do a lot of things to improve the situation in India and help the other training centers produce better radiologists. So the first thing we did was look into the foreign qualifications. So a lot of our radiologists after their MD exam in India try to get UK or US qualifications. The most common qualification they look for is RCR exam, which is a UK Royal College exam. So to do that, previously doctors had to wait for several years, sometimes up to 8 years to get a place in the exam. And then they had to go to London at least 3 times to get the qualifications. It was only affordable to a small number of doctors who had the money and time to do it. So we wanted to change that. So we have made several representations to the Royal College and ultimately managed to get that exam center in India. So that is considered to be one of the major benchmarks in the history of radiology in this country. So now we conduct those exams 2-3 times a year. Several hundreds of radiologists come and take those exams. So once we got the center, we now then wanted to look at how to improve the performance of the radiologist in the exam. Because there used to be a difference in the number of people, the percentage of people passing the exam. Those trained in the UK, the more number of them passed, and Indian pass rate was not that very high. So we started preparation courses. So we run an RCR 2B preparation course. So I'm professor of radiology for Oxford University. I'm a consultant pediatric radiologist in Oxford, and I've also been heavily involved with the Royal College. तो मैं ये जो तजुर्बा मुझे मिला है इन सालों 20 साल काम करने, रेडियोलॉजी ट्रेनिंग तैयार करने, एग्ज़ाम्स करने के लिए, तो मैं इंडियन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया वापस आके कुछ करूँ कि यहाँ का जो देश के जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ फ़र्क हो सकता है। अभी मैं मेरा लाइफ के ये स्टेज में हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, पोजीशंस नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये करने में। एंड मैं जो ट्रेनिंग का
चेंज कर चुका हूँ यूके में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। क्योंकि बच्चे जो इंडिया का है वो किसी तरह से डिफरेंट नहीं है यूके के बच्चे में। जो पेशेंट्स आप हैं, आपका डिजीज़ कुछ डिफरेंट नहीं है यूके, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का पेशेंट्स, अमेरिका पेशेंट्स। तो अगर हम लोग का जो कुछ कर सकता हूँ जिसमें कुछ तरक्की हो, कि यहाँ का लोग का कुछ भला हो, वही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सबको ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, बट मैं ट्रेन कर सकता हूँ। मैं रेडियोलॉजिस्ट को ट्रेन कर सकता हूँ कि वो अच्छे रेडियोलॉजिस्ट बने, सिर्फ पैसा नहीं कमाए बट पेशेंट की भी भलाई करें। एंड वही है हमारे एम, कि अगर कुछ कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि वो लोग गांव में, अपने छोटे छोटे टाउन में अपनी जगह जाए, कि वही एक्सपीरियंस, वही नॉलेज लेके कुछ डिफरेंस कर सके पेशेंट को। अगर 100 भी कर सकता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है, हज़ारों होगा तो एकदम बहुत ही बेहतर होगा। तो यही है, मैं मेरा वर्किंग लाइफ को जो लास्ट 5-10 साल से बचा हुआ है वो आई वांट टू स्पेंड हियर एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, देयर आर लॉट ऑफ गुड टीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस, उससे मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो लोग जैसे ट्रेन करते हैं बहुत अच्छे करते हैं, बट हम लोग और भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं उनको हेल्प करने के लिए। वही है हमारा एम, एंड होपफुली वी विल सक्सीड।